Hey dear viewers, Assalamu alaikum. I'm Farooq Lone. Today we have types of questions. We have these basic types of questions. We have yes no questions. They are also called closed type questions. And we have WH questions. We have tag questions. We have embedded questions. That means we have four types of questions. And I guess we did we have already done these tag questions. We did a video on tag questions. Please search on my channel where these tag questions are. But today, since these tag question is one of the type of questions, so it falls under the domain of basic types of questions. So we will do a bit on tag questions also. First of all, we have yes no questions. They are also called closed type questions. So they are actually short answer, yes or no. So you are compelled to say either yes or no. That's how these questions are. So only yes or no is expected. In rare cases, other words are expected. Many of these questions are formed by putting an auxiliary verb before the subject inversion. So structure of these questions is verb to be and structure be plus subject plus adjective or noun. That makes a yes no question. For example, are you good? So be or is a be verb. Are you, subject is you, adjective good, are you good? So you are compelled either to say yes or no. So in some rare cases you can have some other answer, but usually the answer is a closed type answer that can be yes or no, or it can be noun. For example, are you a machine? So this is how the structure of yes no question follows. And in case of do and does structure, do, does plus subject plus verb यहाँ पे आ जाएगा. For example, do you eat or did you eat? So this is how the structure of yes no question is formed. Now we have WH questions. WH questions start with words like what, where, why, who, whose, when, which. But note also there are other question words that don't start with WH as well. They start with H. For example, how many, how often, how far, how much, how long, how old, etc. So we have a structure with WH. जब आपको WH क्वेश्चंस बनाने हैं तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे आप. पहले आप WH का क्वेश्चन, फिर डू या डज या इनका पास्ट फॉर्म बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, व्हाट फिर डज, व्हाट डज ही डू. WH क्वेश्चन व्हाट, फिर डज, फिर सब्जेक्ट ही आएगा एंड वर्ब डू आएगा. व्हाट डज ही do or what do they eat, etc. And with be verbs, WH question with be structure क्या आ जाएगा? WH फिर be फिर subject. For example, who are you, or who are they, yeah, which is your favorite color, etc. So this is how WH questions are formed. Now we have tag questions. We have done already these tag questions, but simple reminder here, and in addition to that, please remember also these things. Short questions that appear at the end of some sentences, usually to show emphasis, politeness, irony, or lack of confidence. They are also used in informal and spoken English. तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा टैग क्वेश्चन का? मेन क्लॉज प्लस कॉमा, देन प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पर्सनल प्रोनाउन. ऑलरेडी किए हुए हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं समझा पाऊँगा. He, for example, he plays a football, doesn't he?
तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो टैग नेगेटिव में बन जाएगा. इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव, ही डजंट प्ले फुटबॉल, डज ही? Tag question, remember that you should only use personal pronouns in tag questions. These cars are very comfortable. Aren't these cars? So answer can be no or yes. These cars are very comfortable, aren't they? Marky is strikingly beautiful, isn't Mary? So accordingly you can go. Tag questions, special case I B किया है वहाँ पे. I am French, aren't I? Negative में आ जाएगा. I'm not Bangladeshi, am I? So more tag questions. There are also other informal tag questions. You told her no. So it's in addition to those questions that we did in the last video where we made a video on tag questions. So it's in addition. It's not there, but look at these examples here. You told her no. It's a nice car in it. You have the tickets, right? He's a good buddy, eh? Clever at it. Got some trouble? Oh, you must use them in formal. You must not use them in formal language. They are perfect for some informal chats. So formal language में इस्तेमाल नहीं होते हैं. Then we have this fourth type of questions that are called as embedded questions or indirect questions. What are embedded questions? A little more formal and polite questions. Questions. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations. Their form is little different. For example, अगर ये सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन? ये है आपका एक डायरेक्ट सवाल. इम्पोलाइट सवाल है ये. इसको पोलाइट बनाने के लिए आप इस सवाल को एम्बेडेड क्वेश्चन बना सकते हो, सो दैट इट कैन सीम मोर पोलाइट. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेयर द ट्रेन स्टेशन इज? ये इनडायरेक्ट हो गया, तो इसी को हम एम्बेडेड क्वेश्चन कहते हैं. तो आप एक इंट्रोडक्टरी सॉर्ट ऑफ ये ना डिटेल लगाते हैं, इसको डू यू नो, और इंट्रोडक्टरी फ्रेज लगाते हैं, डू यू नो वेयर द ट्रेन स्टेशन इज. तो इसको कहते हैं हम एम्बेडेड क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग वो एंड पे होता है, और एम्बेडेड क्वेश्चन ये आप इंट्रोडक्टरी जो फ्रेजेस हैं ये आप स्टार्ट में इसका लगाते हो. वेयर इज द बाथरूम? ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. तो यू कैन मेक इट मोर पोलाइट if you can make it an embedded question. For example, could you tell me where the bathroom is? ये हो गया indirect और embedded question. Phrases for embedded questions. इन चीज़ों से हम start करते हैं embedded questions. For example, could you tell me where the police station is? Or do you know the post office? Or do you know that man? I was wondering if you can help me. Do you have any idea about how to use computers? I would like to know if you can help me. I would like to know if you can help me in these situations. Would it be possible for you to come? Is there any chance of rain tomorrow? So ये हैं कुछ introductory phrases जो आप इस्तेमाल कर सकते हो embedded questions के लिए या embedded questions को बनाने में. तो more examples will follow, and there are basically 5 rules for embedded questions. Rule 1, ये याद रखें आप. If the embedded question is a part of a statement, use a period and not a question. अगर embedded question जो है वो statement का part है, तो वहाँ पे आपको full stop लगाना है. question tag या question mark नहीं लगाना है sentence के end पे. और ये भी याद रखें आप, if the question is in the present or past simple टेंस, तो हम सिंपल टेंसेस में क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं इधर इन प्रेजेंट और इन पास्ट सेंस. सो डू, डज और डिड का जो है ये आपको वहाँ पे ड्रॉप करना है, म्यूट करना है, एंड चेंज द वर्ब टू इट्स अप्रोप्रिएट फॉर्म. तो फिर अप्रोप्रिएट फॉर्म में इसको आपको चेंज करना है, तब्दील करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर यहाँ एग्जाम्पल देखें आप. डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड ही लीव? तो एम्बेडेड क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लगाया आई वंडर, यहाँ पे आई वंडर, एंड देन व्हाट टाइम डिड ही लेफ्ट. यहाँ पे हमने क्या किया है,
लीव को हमने पास्ट बनाया है और डिड जो था इसको हमने ड्रॉप किया है। तो इनको हमने ड्रॉप करना है और जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है फिर वो लगाना है वर्ब का। सो रूल 2 है, if the embedded question includes an auxiliary verb or the verb to be, reverse the positions of the subject and the auxiliary verb. अगर embedded questions में auxiliary verb हो या to be हो यानी infinitive हो, तो हमने रिवर्स जो सब्जेक्ट है उसकी जगह हमने ऑक्सिलरी वर्ब लाना है। एग्जाम्पल में ये वाजिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डिड ही से, एम्बेडेड क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो इंट्रोडक्टरी जो फ्रेज है कुड यू टेल मी, देन व्हाट ही सेड, डिड हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। सेड इसलिए है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट सिंपल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैन यू हेल्प मी, तो एम्बेडेड क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी। सो यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जब आप एम्बेडेड क्वेश्चन बनाते हो कैन यू हेल्प मी, फिर आप इसका एम्बेडेड क्वेश्चन बनाते हो आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी, तो कैन यू फिर यू कुड, यानी ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस। तो इसी को बोलते हैं हम रिवर्स पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और एम्बेडेड क्वेश्चन में पहले सब्जेक्ट आता है फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है। या यहाँ पे देखें आप, या बी वर्ब आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इज ही अ डॉक्टर, डू यू नो इफ ही इज अ डॉक्टर। सो यहाँ पे देखा होगा आपने, इज ही अ डॉक्टर, पहले बी वर्ब फिर है सब्जेक्ट। यहाँ एम्बेडेड क्वेश्चन में क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर है बी वर्ब। सो ये रूल 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। रूल 3 है, डू नॉट यूज ए वर्बल कंट्रैक्शन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, हमने यहाँ पे कंट्रैक्शन, बिकॉज कंट्रैक्शंस में लीड अस इन ट्रबल, दे आर कंफ्यूजिंग व्हेन यू यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पे देखें आप, डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर इज शी, करेक्ट एम्बेडेड क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डू यू नो वेयर ही इज। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन फॉर्म हमने जो है वो हमने अवॉइड करना है। इनकरेक्ट एम्बेडेड क्वेश्चन हो गया, डू यू नो वेयर हिज। सो हिज यहाँ पे जो है ये कलोकेशन में इट डजंट फिट इन कलोकेशन, सो इट्स टू बी अवॉइडेड हियर द कंट्रैक्शंस ऑफ हिज और शी इज हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो देन वी हैव रूल 4, embedded questions are introduced by whether or not, and if when there is not a yes no question। अगर yes no question नहीं हो तो embedded questions कैसे आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो yes no question है, will he be there, the answer will either be yes or no or something else, one word answer, I'm not sure, ये भी हो सकता है। so do you know if he will be there, तो यहाँ पे हमने जो embedded question है वो whether or not and if से बनाते हैं after the introductory phrases। do you know whether or not he will be there, ये भी ठीक है। do you know whether he will be there or not, ये भी ठीक है। so ये हैं all sorts of embedded questions। now we have rule 5, the infinitive can follow a question word or whether in embedded question। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा what should I do, embedded question इसका बन जाएगा would you tell me what should I do। और embedded question within an infinitive, अगर infinitive के हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको तो should को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर infinitive हो गया जो to form of verbs जिनको आप बोलते हो। would you tell me what to do, so I should जो है ये ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे आपने infinitive डाला है what to do, would you tell me what to do, so this is embedded question with an infinitive। and embedded question होगा इसका है would you tell me what I should do, direct question है इसका what should I do। so embedded question within questions, ये जो है इसका मतलब ये है कि कॉमन इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेजेस हैं। फॉर एग्जांपल डू यू नो क्वेश्चन फ्रेज है, हु नोज क्वेश्चन फ्रेज है, डू यू थिंक क्वेश्चन फ्रेज है, डू यू रिमेंबर, बिकॉज ऑल दीज कॉमन इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस
start either with be verbs or modal verbs or WH questions. For example, do you know, who knows, do you think, do you remember, could you tell me, would you mind telling me. तो कॉमन क्वेश्चंस है इसके ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एम्बेडेड क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चंस, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन है यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस, और इनका जो कॉमन इंट्रोडक्टरी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेज है ये भी क्वेश्चंस है। तो एम्बेडेड क्वेश्चंस इसका क्या बन जाएगा, हाँ ये कॉमन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेजेस को मिलाना है कॉमन क्वेश्चन से, तो बन गया आपके एम्बेडेड क्वेश्चंस। डू यू नो, इसका कॉमन क्वेश्चन है व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, सो एम्बेडेड क्वेश्चन बन जाएगा डू यू नो व्हेन द क्लास स्टार्ट्स, हु नोज व्हाट्स द आंसर, हु नोज व्हाट द आंसर इज। तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना है, जैसे कि क्लास स्टार्ट जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पे जो है एम्बेडेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको हाँ नहीं व्हाट द आंसर इज, तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना है, पहले आंसर आया फिर इज आ गया। तो ऐसे ही सिमिलरली हु नोज व्हाट इज द आंसर, हु नोज व्हाट द आंसर इज, डू यू थिंक कैन ही कम टुनाइट, डू यू थिंक ही कैन कम टुनाइट। सो यहाँ पे आपको रिवर्स ये जो सब्जेक्ट वर्ब है देखने में मिलेगा। डू यू रिमेंबर वेयर इज द रेस्टोरेंट, डू यू रिमेंबर वेयर द रेस्टोरेंट इज, could you tell me is there free parking, could you tell me if there is free parking, would you mind telling me what time is it, would you mind telling me what time it is। so reverse है is it, it is बन जाएगा embedded question में। and then we have embedded questions within statements, इसलिए statements जो ये common introductory statement phrases हैं ये questions नहीं हैं, ये statements phrases statement के phrases लग रहे हैं। for example I wonder, किसी तरीके से ये किसी तरह से कोई question ये नहीं लग रहा है। so I asked, I want to know, I don't know, I'm not sure, the question is let's ask। फिर common questions है is our teacher sick today, so embedded question इसका बन जाएगा I wonder whether or not our teacher is sick today। I asked can I have an extension, I asked if I could have an extension, I want to know how much was your car, I want to know how much your car was, I don't know who does this book belong to, I don't know who this book belongs to। so reverse हो रहा है यहाँ पर subject verb। I'm not sure where are my keys, I'm not sure where my keys are। the question is should we go ahead with it, the question is if we should go ahead with it or not। let's ask do they like video games, let's ask whether they like video games or not। so embedded questions यहाँ पे politeness के लिए इस्तेमाल होते हैं। and that's all for today folks। for more short questions at me, my number is on your screen, and my email ID is also on the screen। this is all for today, stay in touch, I'll be soon back with some new stuff, till then take care, Allah Hafiz।